everyone, welcome back to the channel. I hope all of you are doing good in your own ways, in your own lives. So today we are going to explore a super handy widget in Tkinter known as Spinbox in Python. So this particular Spinbox is being used in creation of a form, game, interactive Python app, and many more. So basically, Spinbox is like a drop down that is being used in several websites and applications to select some number of options like dates, events, custom options, and more than that, like that. So this is the basic definition of a spin box. We can say that. बट इसके अलावा स्पिन बॉक्स का और भी एक डिफरेंस है ड्रॉप डाउन से कि ड्रॉप डाउन में आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस होते हैं वहीं पे स्पिन बॉक्स में डिफरेंस ये है कि ये न्यूमेरिकल रेंजेस में बहुत अच्छा है दिस इज डिफरेंट इन न्यूमेरिकल रेंजेस सो इसके अलावा इस पूरी पर्टिकुलर वीडियो में ये है आपका स्पिन बॉक्स का एक इंटरफेस कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग द कोड टू रन ये इंटरफेस रहेगा दिस इज दिस पार्ट ऑफ द स्पिन बॉक्स और ये है हमारा मेन विंडो एंड ये आपका कोड है ओवरऑल तो बेसिकली स्पिन बॉक्स एक इनपुट विजेट है जो यूजर को अलाउ करता है स्क्रॉल डाउन करके वैल्यूज को सेलेक्ट करे जिसको यूज करनी है वही सिमिलर चीज की ड्रॉप डाउन की तरह है बट ड्रॉप डाउन नहीं है ये सो इस पूरी वीडियो में हम बनाएंगे एक सिंपल सा स्पिन बॉक्स जिसमें कि हम यूजर को अलाउ करेंगे 1 to 10 के अंदर में नंबर सेलेक्ट करने के लिए सो एंड also we are going to start we will be using your python pycharm application so I'm jumping into it ये है हमारा python का pycharm application तो इसको यूज करने के लिए सिंपल सा ऐप डाउनलोड करना है आपको अपने सिस्टम में pycharm का नेम का एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सिंपल कोड मतलब ये तो बहुत सिंपल है कि you फिर using Tkinter we have to call tk so हमारे कोड का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है सेकेंड पार्ट वी हैव टू क्रिएट अ मेन स्ट्रिंग मतलब ये ऑप्शनल है कि आप ये कमेंट लिखें आई एम राइटिंग इट जस्ट फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच वन ऑफ यू अदरवाइज इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट मेन विंडो हमारी यहाँ पे क्रिएशन शुरू हो चुका है सो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे रूट इज इक्वल्स टू ये डॉट then we'll give a title to it सिंपल टाइटल दे सकते हैं जैसे भी दे सकते हैं वो आपकी मर्जी है देन वी हैव टू स्पेसिफाई ज्योमेट्री साइज लाइक जो भी आप अपने स्क्रीन का साइज रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखो and 150 I'm mentioning I'm using this size so we are done with the creation of window हमारा विंडो बन चुका है यहाँ पे अभी हमें बनाना है हमारा विजेट मेन विजेट जो है हमारा स्पिन बॉक्स तो उसको बनाने के लिए हम शुरू करते हैं हमारा कोड लाइक दिस ज्यादा कुछ नहीं करना है हम पहले लेते हैं स्पिन बॉक्स देन के डॉट स्पिन बॉक्स पर रूट इसके बाद हम इसमें असाइन करनी है हमारी वैल्यूज हमारे रेंजेस यहाँ पे आएगा हमारा 0 फिर आ जाएगा 2 एंड देन इज इक्वल्स टू में आएगा हमारा 100 देन वी हैव टू स्पेसिफाई द विड्थ इज इक्वल्स टू 10 सो हमारा यहाँ पे विजेट बन के तैयार हो गया स्पेन बॉक्स का नाउ वी हैव टू पैक इट स्पेन बॉक्स डॉट पैक we'll be giving a padding of 20 दैट्स इट हमारा विजेट भी रेडी हो गया है हमारा विंडो भी रेडी हो गया नाउ व्हाट नेक्स्ट आपने देखूंगा कि हमारी जो मेन विंडो थी जो फर्स्ट मैंने स्लाइड दिखाई थी उसमें था
एक बटन था शो वैल्यू, सो वी हैव टू मेक दैट बटन। उस बटन के लिए हमें चाहिए एक फंक्शन, तो वो फंक्शन बना रहे हैं अभी हम। डेफ शो अंडरस्कोर वैल्यू के नाम से बन रहा है हमारा ये बटन। फिर आ जाएगा हमारा प्रिंट, देन selected value, then spinbox.get. Okay, so we are done here. Now, so we are done with here with our this thing. We can say Spinbox. Spinbox हमारा create हो चुका है, function हमारे create हो चुके हैं. Now what we have to do next? We have to create a button to execute this function is equals to tk dot tk, then button. After that, we'll be writing root, then text, text में we can write just get value, and then you can just give a command show value and oh, done. Then we have just to back this button dot back. That's it. Then root loop and done. So here we have completed our code for this in just few line of code. So let's run this. So run this now. You can see here कि हमारे सारा कोड कंप्लीट हो गया है. दिस इज ऑल आवर कोड दैट वी हैव कंप्लीटेड राइट नाउ. सो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है. सो हियर वी गो, वी हैव आवर स्पिन बॉक्स रेडी विद अस. ये हमारा स्पिन बॉक्स तैयार है. वी कैन सी हियर हमारे वैल्यूज सेलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. Okay, so I've selected 29, get value, and here we got the value, selected value 29. So here our code is working properly.